bearing microsporophylls. Okay, this is the strobili which is bearing. I told you micro मतलब वो क्या बनेगा, मेल बनेगा, मेगा मतलब क्या बनेगा, फीमेल बनेगा. याद रखना, मेगा मेगा क्यों बड़ा वाला, क्योंकि like in human beings also, the female gamete is big, ovary is bigger than the male gamete, that is sperm. So wherever micro you see, that is going to form the male gamete, and wherever mega you see, that is going to form the female. क्या हो गया, micro. Yes, macro, you can say macro, but in biology we are not using macro, we are using mega. Okay, so microsporophyll, they are going to form the male strobili. So the strobili bearing microsporophylls and microsporangia are called microsporangiate or male strobili. So इसमें क्या होगा, microsporophylls present होगा. ओके, माइक्रोस्पोरोफिल्स के अंदर क्या होगा, माइक्रोस्पोरांजिया, माइक्रोस्पोरांजिया के अंदर क्या होगा, microspores. So this is the male cone, we can say. The microspores develop into male gametophytic generation, which is highly reduced and is confined to only a limited number of cells. This reduced gametophyte is called the pollen grain. You know in plants also, what is the male gamete? The pollen grain is a male gamete. So that gametophyte is going to produce a pollen grain. The development of pollen grains takes place inside the microsporangia. So ये याद रखना, spores inside sporangia, sporangia inside the sporophyll, sporangia in sporophyll. So spores, sporangia, sporophyll. So that is what is written here. The strobili bearing microsporophylls and microsporangia are there. They are called microsporangiate or male strobili. So इसके अंदर क्या होगा, microspores होगा. Microspores क्या develop करेगा, male gamete. What is the male gamete? Pollen grain. Clear? So microsporophyll, microsporangia, microspore, pollen grain. This is the order which you can see: microsporophyll, microsporangia, microspore, and then the pollen grain. Microspore क्या बनेगा, gamete, male gamete, which is the pollen grain. The cones bearing megasporophylls. So this is megasporophyll, which will form the female strobili. So the cones bearing megasporophylls with ovules or megasporangia. So megasporophyll, megasporangia, उसके अंदर क्या होगा, megaspores होगा, वो क्या बनेगा, female gamete. So the cones bearing megasporophylls with ovules or megasporangia are called macrosporangiate. As you said macro, no, that is called macrosporangiate or female strobili. So this is female strobili. The male और female को जब उसका picture देखेंगे तो उसी से समझ में आ रहा है, this male is smaller than the female is bigger. So this is called the female strobili. The male or female cones or strobili may be born on the same tree as in Pinus or on different trees as in Cycas. So you can see here, this is Pinus, male and female cone, ये एक ही tree में दिख रहा है. Or it can happen that they may be on the different tree. So that's what is written here. It can be on the same tree or they can be on the different tree. जब different tree में उसका example है Cycas. This megaspore is forming what? Female gamete, right? So the megaspore mother cell is differentiated from one of the cells of the nucellus. Now see, this is the nucellus. When we talk in angiosperms, you will be learning clearly about the structure of an embryo and ovule. Now you just remember this nucellus. You can see this nucellus. This nucellus is protected by a structure which is called the ovule. Okay. When you will be studying for angiosperms, you will study clearly the structure of the ovule. So here what happens, the megaspore mother cell. Megaspore mother cell क्या होगा, जो megaspore को produce करेगा. Obviously mother is going to produce a child, no? So megaspore mother cell क्या होगा, जो megaspore को produce करेगा. So the megaspore mother cell is differentiated from one of the cells of the nucellus. इसमें nucellus होगा, इसमें cells होगा और यहाँ से क्या होगा, one of the cell will be forming the megaspore. So this will from there would be many cells here, उसमें से एक cell जो है क्या बनेगा, megaspore mother cell, जो megaspores बनाएगा. The nucellus is protected by envelopes and the composite structure is called an ovule.
So the whole thing, this whole thing that is called the ovule. इसका देखो protected किससे है? Integument से protected है. The structure, this is not there in your textbook. Need not draw this diagram. Just telling you nucellus कहाँ होता है. जब तुम एंजियोस्पर्म पढ़ोगे तो दैट वुड बी मोर क्लियर. अभी सब सिर्फ जिम्नोस्पर्म में सिर्फ इतना पोर्शन है. ये न्यूसेलस है, ये ओव्यूल की बात कर रहे हैं. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल दैट वी आर टॉकिंग अबाउट. सो दिस इज देयर इज अ न्यूसेलस. उसके अंदर से मेगास्पोर मदर सेल क्या प्रोड्यूस करेगा? मेगास्पोर्स प्रोड्यूस करेगा. और यहाँ पे इसका जो कवरिंग है उसको क्या बोलेंगे? इंटेगुमेंट. दिस ओपनिंग दैट इज कॉल्ड माइक्रोपाइल. This is not there in your textbook. Just since I showed you the diagram, I am telling you. Just remember, the nucellus is protected by envelopes, and that is what is forming the ovule. Okay. The ovules are borne on megasporophylls, which may be clustered to form the female cones. So megasporophylls are that one which form the female cones. ये बस इतना याद रखो. Male cone में microspores होता है, female cone में megaspores होता है. ठीक है. So this is the ovules are borne on megasporophylls, which may be clustered to form the female cone. So megasporophylls are forming the female cone. मेगास्पोरोफिल्स में क्या होता है? मेगास्पोर मदर सेल क्या फॉर्म करेगा? मेगास्पोर्स फॉर्म करेगा. सो हियर यू कैन सी द मेगास्पोर मदर सेल. दिस इज द मेगास्पोर मदर सेल. इट इज फॉर्मिंग व्हाट? वहां पे कौन सा टाइप ऑफ डिवीजन हो रहा है? मियोसिस हो रहा है. मियोसिस हो रहा है तो क्या फॉर्म कर रहा है? देखो 4 मेगास्पोर इज फॉर्म्ड. सो विल इट बी हैप्लॉइड और डिप्लॉइड? मियोसिस हो रहा है. विल इट बी हैप्लॉइड और डिप्लॉइड? Will it be haploid or diploid after meiosis? हाँ, हैप्लॉइड. दैट वुड बी हैप्लॉइड क्योंकि मेगास्पोर क्या हो रहा है? मियोसिस हो रहा है. यहाँ पे देखो ये एक सेल डिवाइड हुआ. देखो यू कैन सी हियर दिस इज वन सेल, देन द डिविजन टेक प्लेस, देन टुवर्ड्स द एंड मियोसिस हो रहा है. इट विल बी फॉर्मिंग 4 मेगास्पोर्स और इसमें से एक है जो पोलन ग्रेन बनाएगा. इसमें से ओनली वन वुड बी फॉर्मिंग द this one. Sorry, not pollen grain. Sorry, one is the one which is going to act for fertilization. One of the megaspores, that's what I told. One of the megaspores enclosed within the megasporangium develops into multicellular female gametophyte that bears 2 or more archegonia or female sex organ. So you see here, this diagram I will show you, that will make you more clear. ये है अपना mature sporophyte, mature pinus, which you can see. This is the, you know this symbol. This is for which is for male and which is for female. Do you know this symbol? Which is for male? ये वाला कि ये वाला किसके लिए बताओ? Male के लिए. And this is for female. So you have a picture. It will be more clear. यहाँ पे क्या बना? ये this is our cone, हाँ? Male cone. And this is our female cone. मेल कोन में क्या होगा? माइक्रोस्पोरेंजियम. उसके अंदर क्या है? माइक्रोस्पोरेंजियम होगा. उससे क्या मियोसिस होगा. मियोसिस से क्या फॉर्म होगा? पोलन ग्रेन्स. पोलन ग्रेन क्या होता है? मेल गैमेटोफाइट विच विल गो एंड फर्टिलाइज. दिस इज द आर्किगोनियम. नो, आर्किगोनियम अभी जो बोला था, ये जो ओपनिंग है. सो यहाँ पे जाके वो फर्टिलाइज करेगा. ये कहाँ का है? मेल गैमेट. ठीक है. This is the male cone. Male cone में क्या है? Microsporangium. I told you micro related to male. So microsporangium है. Microsporangium के अंदर क्या होगा? Meiosis होगा. Pollen grain is formed. Pollen grain will form male. This is the male gametophyte and it will fertilize this. अब इस साइड आ जाओ फीमेल के साइड में. फीमेल, this is the female cone. Female cone के अंदर क्या है? Female cone के अंदर क्या होगा? Tell me. हाँ, माइक्रो और मेगा. मेगा, हाँ, मेगास्पोरेंजियम would be there inside female cone. मेगास्पोरेंजियम के अंदर क्या होगा? मियोसिस होगा. मेगास्पोर मदर सेल है. मियोसिस होगा. दे विल फॉर्म मेगास्पोर. उसमें से एक मेगास्पोर will act in fertilization. So यहाँ पे you can see here this is the one which is this is the portion which is called the archegonium. And here this pollen grain is fertilizing this archegonium, this part, and here fertilization is taking place. Okay, fertilization होने के बाद क्या होता है? Embryo formation होता है and then it forms the seed and then it forms a mature sporophyte.
दिस डायग्राम इज इनफ फॉर यू टू अंडरस्टैंड. क्या बोला मैंने? दिस इज मेल कोन एंड दिस इज द फीमेल कोन. मेल कोन के अंदर क्या होगा? माइक्रोस्पोरेंजियम. उसके अंदर क्या होगा? माइक्रोस्पोर्स. माइक्रोस्पोर्स विल अंडरगो meiosis. They will form pollen grain. Pollen grain is the male gametophyte. मेगा फीमेल के बारे में बोलेंगे तो फीमेल गैमेटोफाइट फीमेल कोन है. उसके अंदर क्या होगा? मेगास्पोरेंजियम. मेगास्पोरेंजियम के अंदर मेगास्पोर मदर सेल. मियोसिस हुआ, मेगास्पोर फॉर्म हुआ. मेगास्पोर will be near this opening and then the fertilization, the pollen grain will come and fertilize this.